जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट। मु विवेक आपण समस्त को इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट को स्वागत जनाऊँगी। तो आमे ऑलरेडी मैग्नेट चैप्टर टा हमर क्लास चली थिला, कोनोसी डिस्टर्बेंस हमर नेटवर्क इशू जोगु क्लास टी कटि जाइतिला। तो तार नेक्स्ट जहाँ हमर बाकी अछि ताको एबे आमे डिस्कशन करबा। गोटे मिनिट जो मन लाइव चाहउछन जॉइन होबा पई जॉइन ही जानतो। गोटे मिनिट पिला माने गोटे मिनिट जो मैंने क्लास करिया चाहते जॉइन हो जाओ। नेटवर्क इशू टी रोचे से क्लास कटि जाऊँ अधारू। हाँ चलतु आम आमर पढ़े जो मैंने क्लास जॉइन होबार अच्छी से आसिक जॉइन करेंगे। ऑलरेडी ये पर्यंत आम सारी देथिले। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट कौन अच्छी आम डिस्कशन करवा चलतु। से कौन कहला ना ए मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट गोटे मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करने एबल अच्छे ना निकेल कोबाल्ट एंड स्टील स्टील निकेल और कोबाल्ट को मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट क्या निकेल कोबाल्ट एंड स्टील को अट्रैक्ट करने कौन अच्छी ना से एबल अच्छे। ए कौन कहला ए सोलिनॉइड coil most have it is कौन ना a solenoid coil most have its length greater than breadth breadth थारु length रा greater than हबो length greater than काटा ना breadth थारु। a current carrying conductor is surrounded by a magnetic field exits in कौन कहला ना circles above the conductor is discovered by कहा द्वारा ना ओरिस्टेड द्वारा। कौन कहला आउ थरे पढ़िया देखो ना a current carrying conductor is surrounded कौन है तो a current carrying conductor surrounded रे by a magnetic field exit गोटे magnetic field exit करूची in circle above the conductor is discovered by कहा द्वारा ना ओरिस्टेड कहले कि जदि गोटे कंडक्टर रे सराउंड रे कौन होची मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट करूची। जो कंडक्टर अच्छी हमर ए कंडक्टर रो ए जो चारि पटरे कौन ना मैग्नेटिक फील्ड हमर कौन होची ए चारि पटरे कौन होची ना मैग्नेटिक फील्ड हमर एग्जिट करूची माने रहूची ताकू किए बाहर करले मन रखियो ताकू ओरिस्टेड बाहर करथिले किए ना ओरिस्टेड ताकू बाहर करथिले। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन होची देखिबा the unit of flux density Weber per meter square एटा मध्ये बहुत इंपोर्टेंट रोज पिला माने आरआरबी रे ए क्वेश्चन ना मध्ये आस्तिला यूनिट ऑफ कौन कहला यूनिट फॉर फ्लक्स डेंसिटी जो फ्लक्स डेंसिटी अच्छी हमर तार यूनिट कौन ना फ्लक्स डेंसिटी रो यूनिट हैला वेबर पर मीटर स्क्वायर कौन कहला ना वेबर बाय मीटर स्क्वायर कौन मीटर स्क्वायर वेबर पर मीटर स्क्वायर कहार हमर यूनिट ना फ्लक्स डेंसिटी भला बार मन रखियो फ्लक्स डेंसिटी रो यूनिट कौन वेबर पर मीटर स्क्वायर फ्लक्स डेंसिटी रो यूनिट कौन ना वेबर पर मीटर स्क्वायर एटा इंपोर्टेंट रहउची। यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी वेबर ऑफ मीटर स्क्वायर कहार यूनिट ना फ्लक्स डेंसिटी रो यूनिट। नेक्स्ट जीवा द मैग्नेटिक पोटेंशियल इन ए मैग्नेटिक सर्किट can be measured in term of कोटा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स से हमें डिनोट करूछु कोन ना ए मैग्नेटिक पोटेंशियल इन ए मैग्नेटिक सर्किट रे can be measured in term of कहा द्वारा ना मैग्नेटिक मोटिव फोर्स द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट जीवा कोन देखिबा direction of force on a conductor in a magnetic field is determined by कहा द्वारा फ्लेमिंग को लेफ्ट हैंड रूल द्वारा। direction of a force गोटे हमर जो कंडक्टर रे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड गोटे मैग्नेटिक फील्ड रो डिटरमाइन कहा द्वारा ना फ्लेमिंग को लेफ्ट हैंड रूल द्वारा कहा द्वारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द्वारा भलो मन रखियो फ्लेमिंग को लेफ्ट हैंड रूल द्वारा कोन होची आमे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंडक्टर डिटरमाइन करूछु। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कोन कहला ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कोन होची ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन लिंकेज रे कोन होची ना मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किए ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज रो रेट ऑफ चेंज टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची the electrically current is analogous to the magnetic कौन कहला to the magnetic circuit कौन ना ता फ्लक्स टा सब मन रखियो कौन ना the electric current रो कौन होची ना the electric current is analogous to the magnetic circuits किए ना फ्लक्स नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन अछि देखिबा परमानेंट मैग्नेट आर मेड ऑफ जो परमानेंट मैग्नेट हमर अछि सेटा मेड ऑफ कोडरे आनलिको सो एटा मध्ये इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट रहउची कोन रहइला ना जो परमानेंट मैग्नेट ता हमर अछि कोन ना परमानेंट मैग्नेट ता कोडरे तयारी सबले मन रखिबो आनलिको रे कोडरे तयारी कोडा ना परमानेंट मैग्नेट ता जो परमानेंट मैग्नेट हम कोडरे तयारी करूछु आनलिको रे कोडरे ना आनलिको रे जानि पारलो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन अच्छे देखिए द मेटेरियल स्लाइटली रिपेल जदि मेटेरियल स्लाइटली रिपेल कला ताको हमें को मेटेरियल कहबा सेटा हला डाई मेटेरियल जानि पालो को मेटेरियल ना डाई मैग्नेटिक कोडा ना फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल हला जे स्ट्रांगली अट्रैक्ट करिवो ए जगह देखि दो गुटे मिनिट चलो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन देजी ना टू प्रोवाइड इंडक्शन इन ए सर्किट कौन कहले टू प्रोवाइड इंडक्टेंस इन ए सर्किट डैश इज यूज कोटा का हम यूज करू छु चोक को यूज करू टू प्रोवाइड इंडक्टेंस इन ए सर्किट गोटे सर्किट रे इंडक्टेंस प्रोवाइड करिया पे हमें काहा को यूज करू छु ना चोक को ए चोक रु गोटे क्वेश्चन एनएफएल एग्जाम रे आसीथिला टू प्रोवाइड इंडक्टेंस इन ए सर्किट डैश इज यूज कोटा को यूज करा होची ना चोक को हम यूज करू छु टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डैश मैग्नेटिक इंडक्शन रो यूनिट कोन मैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट कोन ना टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक कोन इंडक्टेंस मैग्नेटिक इंडक्टेंस रो यूनिट कोन टेस्ला नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन है डैश इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कोटा को हमें डिटरमाइन करू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ भाबरे डिटरमाइन करा जाय फ्लेमिंग को राइट हैंड रूल is determined is used to determine the direction of induced EMF हेले कोन induced EMF हेले फ्लेमिंग को राइट हैंड रूल फ्लेमिंग को लेफ्ट हैंड रूल कोठी हम यूज करू छु एड देला हाँ एड देखो फ्लेमिंग को लेफ्ट हैंड रूल हमें कोड यूज करले ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स जदि डायरेक्शन ऑफ फोर्स पचला ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ फोर्स होले फ्लेमिंग को लेफ्ट हैंड रूल अब डायरेक्शन ऑफ कोन ना डायरेक्शन ऑफ जदि पचला इज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जदि हम कहला ताले कोन फ्लेमिंग को राइट हैंड रूल भलो भाबे मन रखिबो इंड्यूस्ड ईएमएफ पई हमें को रूल यूज करू छु ना इंड्यूस्ड ईएमएफ पई हमें सब बेले फ्लेमिंग को राइट हैंड रूल यूज करू छु फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कोडी इंड्यूस्ड ईएमएफ आउ इंड्यूस्ड फोर्स को हमें डिटरमाइन कोड करू छु ना इंड्यूस्ड फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स रो डायरेक्शन को मापिया पई हमें कोन यूज फ्लेमिंग को लेफ्ट हैंड रूल नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन रहउची द मैग्नेटाइज स्टील इज डिफिकल्ट because of कहा पाई ना लो परमेबिलिटी जोगु कोन द मैग्नेटाइज स्टील इज डिफिकल्ट स्टील टाको मैग्नेटाइज करिवारे डिफिकल्ट होच कोन पे लो परमेबिलिटी कोन लो थिबारो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कहला डैश काइंड ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज वाटर टा को प्रकार मैग्नेटिक सब्सटेंस पिला माने एटा बहुत इंपोर्टेंट रहउची एटा मध्ये बारंबार क्वेश्चन ले पचारुची जो वाटर टा हमर अछि सब बळे मन रखिबो एटा गोटे डाईमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल ना डाईमैग्नेटिक मटेरियल जानि पारलो वाटर टा को मैग्नेटिक मटेरियल डाईमैग्नेटिक मटेरियल सब बळे मन रखिबो वाटर टा डाईमैग्नेटिक मटेरियल ताल मते को फ्लेमिंग को लेफ्ट हैंड रूल कहा पर होउची डायरेक्शन ना फोर्स हाँ
direction of force हेले magnetic left hand rule, direction of force हेले magnetic left hand rule, ଆଉ direction of induced EMF जोटा थिला direction of induced EMF को rule ना is used to direction of induced EMF Fleming को right hand rule। एमिति मझिरु मझिरु क्वेश्चन आसीबो जो माने भी अच्छो चार सेक्शन रे आंसर दे परिबो। In a direction internally the magnetic lines of force travel in bar magnet, जो bar magnet हमर अछि in dash direction internally रे हमर केमिति डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ना साउथ टू नॉर्थ। तो पिला माने एडी ध्यान दियो मु तुमको भल से पूरा क्लियरली कहि दोउची। एटा धर हमर गोटे बार मैग्नेट अछि, एटा कोन ना गोटे बार मैग्नेट हमर। गोटे मिनिट खाली पिला माने हाँ एटा हला गोटे कोन ना बार मैग्नेट। से हम क्वेश्चन कोन करछि, एटा हला गोटे नॉर्थ पोल, एटा गोटे साउथ पोल। तो सी क्वेश्चन हम कला जो इंटरनली फ्लक्स टा कोपुट को जाउछि इन डैश डायरेक्शन इंटरनली द मैग्नेटिक लाइंस, जो मैग्नेटिक लाइंस टा हमर कोन ऑफ फोर्स ट्रैवल इन बार मैग्नेट। बार मतलब केमिति भलो भाबे मन रखियो सबले नॉर्थ टू साउथ को जाय, एटाला आउटर रे नॉर्थ टू साउथ को हमर मैग्नेटिक लाइन टा जाय जानि पारलो। किंतु इंटरनल रे सबले मन केमिति आसिला आसिकी साउथ रू नॉर्थ को जीवो कोडू ना साउथ रू नॉर्थ को जीवो, किंतु आउटर रे नॉर्थ रू साउथ को जीवो। तो एटा कोन साउथ टू नॉर्थ होबो सबले मन को। एटा मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन इंटरनली द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स ट्रैवल इन बार मैग्नेट रे। What will happen if a bar magnet is broken into two pieces? जदि दीटा पीसेस रे कोन हेगला मैग्नेट धर एटा हमर गोटे बार मैग्नेट अछि, एटा कोन हला नॉर्थ पोल थिला, एटा साउथ पोल थिला, मझिरु भांगी गला। मझिरु जदि भांगी गला तबे दीटा हेगला, एटा गोटे मैग्नेट हेगला, एटा गोटे मैग्नेट हेगला। तो से कोन बुझी each pieces will become a सेपरेट मैग्नेट। ताहले दीटा को फर्स्ट पीसटा सेकंड पीसटा दीटा कोन हे जिवो ना सेपरेट मैग्नेट रे हे जिवो। कोन सेपरेट मैग्नेट हे जिवो, कोन ना सेपरेट मैग्नेट हे जिवो। भलो भाबे मन रखियो जदि बार मैग्नेट हमर जत्ते भाग भांगी हे जाऊ से सेतडा सेपरेट मैग्नेट हे जिवो। The magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage। कौन कहला the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the कहा ऊपरे rate of change of flux linkage। कौन Faraday's second law of electromagnetic induction। Faraday's second law of electromagnetic induction हिसाब रे the magnitude of the induced EMF magnitude ता कोन होची is directly proportional to the rate of change of the flux linkage रो rate of change रे directly proportional होची। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कहला the expansion from magnet motive force as a regarding of electromagnetism से कोन हबो magnet motive force हबो। गोटे मिनिट पिला मन according to Fleming left hand rule, according to कौन कहला Fleming left hand rule, the angle between the thumb middle finger and forefinger must be कौन right angle by 90 degree। सबले मन रखियो according to Fleming left hand rule। Fleming को left hand rule कौन कहिछि ना Fleming को left hand rule हमु कहिछि सबले मन रखिबो। एटाला Fleming को left hand rule धरो thumb forefinger आ middle finger ता बिटवीन जो एंगल गुडा केते डिग्री होबो सबले गोटे गोटे राइट एंगल बा 90 डिग्री होथिबा निहाती आवश्यक। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स मैग्नेट मोटिव फोर्स जो एमएमएफ अछि एमएमएफ रो यूनिट पचारला कोन ना एम्पियर टर्न। मैग्नेट मोटिव फोर्स रो यूनिट हैला एम्पियर टर्न। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जिबा whenever the magnetic flux linking कौन कहला जोठी whenever the magnetic flux linking with a conductor
change an EMF is induced in that conductor. The above statement is due to कौन भाई ना Faraday's law of electromagnetic induction कौन कहला Faraday's law of electromagnetic induction सबବେଳେ ମନେ ରଖିବ Faraday's law of electromagnetic induction କଣ କହୁଛି whenever the magnetic flux linking ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ magnetic flux linking ହେଉଛି with a conductor ଗୋଟେ conductor ସହିତ charges as କଣ ହେଲା ନା EMF is induced in that conductor EMF ମଧ୍ୟ induce ହେବ the above statement is due to କିଏ ଦେଇଲେ Faraday's law of electromagnetic induction ରେ ଦିଆଯାଇଛି next important point କଣ କହିଲା ଆମକୁ ଦେଖିବା a substance that have low resistivity कौन low resistivity can use for the manufacture of कौन electromagnetic सबବେଳେ मन रखिबो a substance that has low reactive can be used for the magnitude of कौन electromagnetic ଉପରେ का सहित ना electromagnetic ଉପରେ a substance that has low resistivity can be used for the manufacture of electromagnets. The hysteresis loss is used in steel induction heating. कौन कहले ना steel induction heating. Hysteresis loss is used in कोठी ना steel induction heating रे use करा होची कोठी ना steel induction heating रे. Next one कहला the positive sensitivity of dash is very high कोटा ना ferromagnetic material दा सब नंबर the positive sensitivity जो positive sensitivity अछि dash is very high कोटा very high रे ना हमर ferromagnetic material रे तार positivity sensitivity ता सबले high रहइबो An electric dipole is placed in a uniform electric field dash the tools electric force on the dipole रे सबବେଳେ ମନେ ରଖିବ always zero जो dipole ଅଛି ଆମର dipole ଅଛି an electric dipole ଗୋଟେ electric dipole is placed in a uniform electric field रे uniform electric place କରାହେଇଛି dash the tool electric force on the dipole କଣ ହବ ନା always zero ସବୁବେଳେ zero ହବ the property of a coil producing induced EMF due to the changing flux associated with an कौन हबो inductance associated with an कौन द कहा द्वारा ना inductance द्वारा सबବେଳେ मन रखिबो the property of coil producing induced EMF due to the changing flux association with कहा द्वारा ना inductance द्वारा कहा द्वारा ना inductance द्वारा A dash is a material that can be easily magnetized and can be made a very strong magnetic. A dash is a material that can be easily magnetized can be easily magnetized and can be made a very strong magnetic ferromagnetic material ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब मन रखिबो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमरो अछि से कोन रियो ए डैश इज ए मटेरियल गोटे फेरोमैग्नेटिक होची गोटे मटेरियल दैट कैन बी इजीली मैग्नेटाइज बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाय एंड कैन बी मेड ए वेरी स्ट्रांग मैग्नेट गोटे बहुत स्ट्रांग मैग्नेट मध्ये तयारी करि दे materials that have a high resistance can be used to make जदि गोटे मटेरियल ले कोन हेतिबो have a high resistance can be used क्या को प्रकार ना परमानेंट मैग्नेट रे हमें यूज करि परिया कोडी ना ई मटेरियल सबले मन आलिका जो कहितली हां सेटा मटेरियल that have a high resistance हेतिबो can be used to make ता तयारी कोडा हम करि परिबा ना परमानेंट मैग्नेट हम सिटी तयारी करि परिबा the value of the electric field ro value intensity inside a field गोटे कोन कहला जदि inside a field रो due to point charge can be कोन हबो सबले मन रखियो डिटरमाइंड बाय कहा द्वारा ना कूलम्स लॉ द्वारा हमें कोन द value of electric field रो value हमें डिटरमाइन करि पारो electric field रो value the intensity inside a field due to point charge each be determined by कहा द्वारा ना कूलम्स लॉ द्वारा if two charge bodies having charge कोन हेतिबो +2q and -5q
are brought in contact, then the tools change will be kete habo -3. The magnetic field for the kon कहला the synchronous motor is created from dash by the use of permanent magnet kon कहला magnet. The magnetic field for the synchronous motor is created from dash by the using of permanent magnet. का द्वारा ना नोडियम बोरन आयरन से kon कहला ता सहित सेमेरियम कोबाल्ट आ kon कहला ferrite. An element whose permeability is less than that of its free space is कौन हबो डायमैग्नेटिक हबो सबले मन रखिबो an जो एलिमेंट अछि whose permeability is less than that of its free space जो कौन हला डायमैग्नेटिक हिसाब रे dash device stores energy in the form of a magnetic field. क्या द्वारा ना इंडक्टर द्वारा सबले मन रखिबो इंडक्टर गोटे डिवाइस स्टोरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में किए स्टोर करी के एनर्जी को रखुची इंडक्टर रो काम इंडक्टर कोन करूची इंडक्टर गोटे डिवाइस टे स्टोर करूची एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में किए स्टोर करूची ना इंडक्टर. Such a material which can be magnetized very rarely in called ताको कौन कहबे ना paramagnetic कौन कहला such a material which can be magnetized very rarely is called कौन ना paramagnetic. Dash is the term related to the phenomena where a change is current through an inductor cause one voltage to be induced in another. कोठा हबो ना mutual inductance टा हबो कोन ना mutual inductance टा is the term सेटा गोटे term related to the कहा सहित ना phenomena where a change is current through an inductor cause one voltage to be induced in another. Next one कौन कहला the magnetism remaining in a medium when the external magnetic field is removed is called कौन हबो ना remains कौन हबो ना remains. Dash at a point is defined as the force experienced for unit positive at a point in an कौन कहला ना इलेक्ट्रिक फील्ड कोठा हबो ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टा हबो कोठा ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टा. Next, what is the value of susceptibility टा value कौन take in the case of volume ना 0 सबले मन रखिबो what is the value of susceptibility taken in the case of volume vacuum रे susceptibility केते पचारची हमकु केते ना 0. The dash is used to show the relation between the magnetic flux density and the magnetic field strength of a particular material. केते ना BH curve टा हमकु देखो जी the BH curve is used to show the relation between the magnetic flux density and the magnetic field strength of a particular material. All points on an equidimensional surface are the कौन ना same potential रे सबले मन रखिबो all points on an equidimensional surface are at the same position कौन ना same potential ता दीटांको ये कौन ना same potential. When an experience of force there is an electric field केते electric charge हिसाब रे when an electric charge experience of a force there is an electric field सेटा गोटे कोन हबो ना electric field भाबरे ये हि जीवो. The flux leakage कोन कहला sufficient of electric machines varies between कहा का मतलब 1.1 to 1.25 भितरे 1.1 to 1.25
रे नेक्स्ट पॉइंट कौन कहले देखिबा the magnetic pressures which set of differs the flux in a magnetic circuit is called कौन magnetic motive force magnetic motive force हम कहा कहू ना the magnetic pressures which set of defect the flux in a magnetic circuit is called कौन magnetic motive force आउ थरे देखो द मैग्नेटिक प्रेशर जो मैग्नेटिक प्रेशर दिया होची व्हिच सेट्स जोटा कि सेट करची और डिफेक्ट कोन करी डिफ्लेक्ट द फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट रे डिफ्लेक्ट करची कोन फ्लक्स को सेटा को हम मैग्नेटिक मोटिव फोर्स मधना कहि पाइबा the electron lines of a force always start at to na positive charge the electric lines of a force always starts at positive charge सबले कोन ना पॉजिटिव है मन रखियो the electric lines of a force always start at positive charge the static charge generated in the liquid remains on the top surface of the liquid on the top surface of liquid मन रखिबो on the top surface of liquid the static charge generated in the liquid remain on the top surface of liquid सबले मन रखियो top surface रे हुए Coulomb's law for the force between electric charge is most similar to कौन Newton's law gravitation Newton's law gravitation रे कौन कहला ना between electric charge is most similar Coulomb's law for the force रो Coulomb's law between कहा मधरे electric charge is most similar कहा ना Newton's law मध्य जहा कहिथिले आ Coulomb's law मध्य similar होची charging by induction the charged body कोन हो does not less on any charge कोन कहला ना charging by induction द्वारा जदि हम चार्ज करूछु the charging body ता सबले मनबो does not lose any charge कोनसी प्रकार चार्ज को लॉस करे नै what make two equal and opposite points changes placed at a short distance कोटा ना electric dipole electric dipoles but makes two equal and opposite point changes placed at a short distance रे कि ना electric dipole Ampere's law is used to find the direction of rotation of a lines of force on a carrying wire कोन सबले मन रखियो कोन ना Ampere's law कोन कहले ना direction of rotation of a lines of force on a carrying wire केते होबो ना Ampere's law is used to find केमिति हम फाइंड करिया पे Ampere's law यूज करू ना direction of rotation lines of force रो direction of rotation lines को हम कोन करू carrying on wire द्वारा carrying करू reluctance of a material varies with the कहा द्वारा ना length of the flux path cross sectional area MF and permeability द्वारा alternating current is generated by rotating a coil कोन हबो ना magnetic field हबो alternating current is generated by rotating a coil सेटा कोन हबो ना magnetic field the total number of lines of force existing in a particular magnetic fields called कोन ना magnetic flux सबले मन रखियो the total number of lines of force exciting in a particular magnetic field is called magnetic flux. Hard steel is suitable for making permanent magnets because it has good residual magnetism. सबले मन रखिबो hard steel is suitable जो hard steel दा सबले suitable कोन पई for making permanent magnet. Hard steel दा सबले suitable कोन पई hard steel दा सबले suitable it has good residual good residual magnetic permanent magnet theory कोरिया पई hard steel को हम कोन में बार यूज करू ना it is good residual magnet residual magnet भलो थिबा नेक्स्ट पॉइंट कोन कहि देखिबा the magnetic found in
नेचर इज नोन एज लोडस्टोन जो लोडस्टोन अच्छी आम कौटू पाई एटा आम कौट पाई ना जो आम नेचर पाई नेचर पाई मैग्नेट ना कौन ना नेचर आम जो मैग्नेटा पाइचु तार ना है लोडस्टोन सब मन रख क्वेश्चन बारंबार उठाऊँ लोडस्टोन टा कौ प्रकार मैग्नेट ना नेचुरल मैग्नेट नेम कौन लोडस्टोन those material whose कौन कहला ना रिटेंटिविटी इज हाई आर यूज टू कौन पे ना परमानेंट मैग्नेट रे सब मन रखियो those material whose retentivity is high are used to make कर्म ना परमानेंट मैग्नेट यूज करिवो the flux of electromagnetic can be increased by कहा द्वारा ना current द्वारा the flux of electromagnet can be increased by कहा द्वारा ना current द्वारा a magnetic field exciting around कहा द्वारा ना moving charge द्वारा a magnetic field excite कहा द्वारा ना a magnetic field excites around कहा द्वारा magnetic जो moving coil अछि हमरो moving coil द्वारा कोन होरुची ना exit around का के ना magnetic field हमर कोडी exit करूची बोली पचारची ना moving charge coil रो moving रे जो moving charge अछि सेठी हमर exit करूची तो थैंक यू एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद क्लास टी लास्ट पर्यंत देखि तो नेक्स्ट जहाँ भी आमर इम्पोर्टाट रोचे आ गोटे क्लास आम डिस्कसन करा ऑलरेडी 30 मिनट क्लास हो गलानी तो पिला माने बोरिंग हो तो चलते